Good afternoon, my friends. Good afternoon, sir. Okay, so today we will see the lungs diseases, disorder of lung. इसके पहले भी हमने लंग्स के डिजीजेस देखे हैं, अस्थमा, है ना। तो आप लोगों को लंग्स का कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो पता ही है। तो उसी टाइप का ब्रीदिंग डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम का डिजीज दैट इज द ब्रोंकाइटिस। तो इट इज वेरी सीवियर इमरजेंसी डिजीज जिसमें पूरा एयरवे ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ लंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स। तो ये भी एक इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी टाइप डिजीज है। इट इज अ क्रॉनिक डिजीज बट acute exaggeration जब होता है तो it may be the severe syphilitic condition. Yes. So the bronchiectasis ये शुरू करने के पहले हम एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो यूट्यूब पे ये सेशंस चल रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और आज हमारा जो चैनल है सदगुरु होम्यो हॉस्पिटल, इसके 501 सब्सक्राइबर हो गए। सो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। और आप में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हम सेशंस ले रहे हैं, इस जैसा आप लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है उसी तरह से और भी डॉक्टर्स को इसका बेनिफिट मिले, इसलिए आप अदर्स डॉक्टर्स को, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, फॉलो करने को बोलिए, वीडियो लाइक्स करने को बोलिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आते हैं वो आप लोगों को उसका पहले ही इंडिकेशन मिले और आप लोग उसे इजीली देख सके। तो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उनको हमारे इस सेशन से जुड़ने को बोलिए ताकि ये नॉलेज जो विजयकर सर ने हमें दिया है वो सभी को मिले। जब ये सभी को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली होम्योपैथी की वैल्यू बढ़ेगी, लोग होम्योपैथी की तरफ और भी बढ़ेंगे और भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहेंगे, यूज करेंगे। और सभी जो भी ह्यूमैनिटी है, जो भी लोग, जो भी पेशेंट्स सफ़र हो रहे हैं डिजीजेस से, उन्हें होम्योपैथी का बेनिफिट मिले और वो हम उन लोगों को उनके पेन में से निकाल सके, उनके दुख में से निकाल सके। इसलिए इस नॉलेज को और बढ़ाओ, सभी को दो, सभी को बताओ। तो आप वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं, इवन पेशेंट्स को भी आप बता सकते हैं पेशेंट्स, क्योंकि इसमें हम जो कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं डिजीज के लिए, जो इंफॉर्मेशन बताते हैं, तो वो हिंदी में होने की वजह से थोड़ी बहुत हिंदी उसमें हम ऐड करते हैं, कभी कभी मराठी भी होती है, तो इजीली पेशेंट लोग भी इसको समझ सकते हैं। तो अगर किसी को
समझाना है कोई पेशेंट को कि ये क्या होता है, क्या चीज है, क्यों होता है। बहुत बार पेशेंट का यही सवाल होता है, पहला सवाल कि ये हमें क्यों हुआ। तो उसके लिए मेन होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट बताना जरूरी है, तो आप लोग पेशेंट को भी ये बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज 501 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सो अभी हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन like asthma. So long disease, chronic disease, recurrent attacks इसके पेशेंट को हो सकते हैं। So conditions where the airways of the lungs become wide, yes, widened मतलब जब पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, लंग्स इन्फेक्शन होगा, एयर ट्यूब्स में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद इन्फेक्शन के बाद वहां पे जो एयर ट्यूब्स है वो एक्सपांड होते हैं because of excessive accumulation of mucus. So lungs become widened, leading to a buildup of excess mucus. इन्फ्लामेशन के स्टेज के बाद वहां पे एक्सेस सिक्रीशन होता है म्यूकस का, दैट कैन मेक द लंग्स मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। इसकी वजह से उसमें बट से इन्फेक्शन होना, लंग्स की कैपेसिटी कम होना, लंग्स की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कम होना, lungs become weak. The most common symptom of bronchiectasis include a persistent cough that usually brings up phlegm, sputum, shortness of breath, लास्ट में shortness of breath। एयर जाने के लिए वहां स्पेस ही नहीं बचता है, दैट्स व्हाई पेशेंट फील्स shortness of breath, breathlessness। So you can see in diagram, see the normal tube and the normal cilia inside the tube. But when this infection occur in the tubes in the lungs, lungs become swell, tube become large, dilated, and the cilia become damaged. So excessive mucus, here you can see excessive mucus accumulation is there. That's why patient श्वास नहीं ले पाता, एयर अंदर जाती नहीं, दैट्स व्हाई पेशेंट फील्स ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इन एक्सरे यू कैन सी इजीली द डायलेटेड लंग, the swelling in lungs, and the accumulation of mucus, yes। So this is the condition of bronchiectasis। तो ये chronic disease है। It is a condition, it is a condition, you can see in this diagram also, see the tube become, the mucus, the phlegm किस तरह से accumulate हुआ है in the tube, and in this figure you can see the damage of lungs, here the yellow phlegm you can see, yes। So it is a condition in which the lungs airways become damaged, मेकिंग इट हार्ड टू क्लियर म्यूकस, यस। तो डैमेज होने की वजह से म्यूकस को वो बाहर एक्सपेल कर ही नहीं सकते लंग्स, दैट्स व्हाई वहां पे सब म्यूकस, फ्लेगम, सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं, अल्टीमेटली इट डैमेजेस द लंग्स। सो ब्रोंकाइटिस में रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन और मेडिकल कंडीशन सच एज न्यूमोनिया। दिस इज सेकेंडरी टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बाद भी, न्यूमोनिया में भी कफ होता है, म्यूकस जमा हो जाता है, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस जब होता है उसके बाद भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सो म्यूकस बिल्ड्स अप एंड ब्रीड्स बैक्टीरिया causing frequent infections, yes। So that's why it is occur frequently, patient feels or patient have attacks frequently of bronchiectasis,
Symptoms include a daily cough that occurs over months or years and daily production of large amount of phlegm. Yes. So treatment may include the deep analysis. Deep analysis according to the teaching of Dr. Praful Vijaykar sir. Sir always says in this disease like asthma, bronchiectasis, always give the GCS. Take the proper history, analyze the case and find out the syphilitic rubrics and give the GCS. So this is the bronchiectasis. Now पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? किस टाइप का डिजीज है? क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पर से हम माइजम सिलेक्ट करते हैं. अगर पैथोफिजियोलॉजी हमें पता है तो वी कैन easily analyze the case, easily select the rubrics according to myism. Yes. So the three most significant mechanisms that contribute to the pathogenesis. यहाँ पे भी तीन मेन मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि होम्योपैथी में तीन मेन माइजम्स होते हैं. यस. तो अकॉर्डिंग टू दैट माइजम्स पैथोलॉजी, फिजियोपैथोलॉजी होना जरूरी है. तो जिस तरह से पैथोलॉजी होगी डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या हो. सो जैसे हमारा सोरा के बाद साइकोसिस होता है, साइकोसिस के बाद सिफिलिस होता है. तो ब्रोंकाइटिस में क्या पैथोलॉजी है? तो देयर आर थ्री मोस्ट सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू पैथोजेनेसिस of bronchiectasis are recurrent infection. So the starting of this disease is inflammation. So first ट्यूब्स में, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा. सो रिकरेंट इन्फेक्शंस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स accumulation ऑफ म्यूकस. उसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब्स ऑब्स्ट्रक्ट होंगे. या फिर पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस, दैट मीन्स fibrosis, that is psychosis. So peribronchial fibrosis, that's why the tubes become blocked. The process begins with inflammatory damage to the bronchial walls and which then stimulates the formation of excess thick mucus. This is the psychosis. Afterward, the cilia of the tubes become disturbed. So this is soropsychosyphilitic. जिस तरह से पैथोलॉजी है उसी तरह से हमें पेशेंट को बाहर निकालना है फ्रॉम सिफिलिटिक टू साइकोटिक टू सोरिक. So you can see in this diagram how the pathophysiology occur in this disease. First, the triggering factors. It is always present in the air, in the surrounding atmosphere. So triggering factor always attacked on our lungs. So this gives rise to airway infection or airway inflammation. Then this inflammation goes inside and ineffective pulmonary defense. It stimulates to ineffective pulmonary defense. So it reaches up to the pulmonary part of the lungs. Then the defense of lungs become fail. Afterward, there is the accumulation of mucus, secretion of mucus, that is the sputum, hypersecretion. This is the second stage. First stage inflammation, second stage the accumulation of mucus is phlegm or sputum, that is psychosis. And afterward, impaired
सो मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। ओके, सो आफ्टरवर्ड जब म्यूकस एक्युमुलेशन हो जाएगा, देन एयरवेज बिकम ब्लॉक, दिस इज साइकोसिस। उसके बाद दिस secondary functions become fail, and afterward lung damage start, destruction of cilia, उसके बाद total lungs collapse, this is syphilis. This is the pathophysiology: soric, psychotic, and syphilitic inflammation, accumulation, and afterward destruction. Yes. Now, what is the layer? Lungs come into second layer and the fourth layer, mesodermal organ. In second layer, that is the endoderm, only linings of lungs comes into the second layer. Only superficial linings comes into the second linings of trachea, linings of uh, bronchi, lungs, etc. And in mesoderm, there is pleura and the lungs. So that's why here the destruction in lungs occur. That's why it comes into the fourth layer, mesodermal organ. And the miasm of this disease is first inflammation, that is sora, second accumulation of mucus is psychosis, and third lung damage is syphilitic. So it is a trimiasmatic disease, soric, psychotic, and syphilitic. When patient comes in first stage, that is only the inflammation of lungs. In this stage, you can prescribe according to the acute chart of Dr. Praful Vijay sir. In psychosis, that means in second stage, when there is profuse accumulation of phlegm, you can give according to the GCS. So take the history and find out the syphilitic rubric and prescribe GCS. And third, it needs the complete observation and deep history with positive factor, with conflict, genetic disposition and reaction, most of the syphilitic. So find out the syphilitic rubrics and prescribe. So this is the miasm and the conflict of lungs. Yes. So हमने देखा ही है इसके पहले भी कि लंग्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है फियर एंड फ्राइट. So fear or fright, and that not a simple fright, but it is a death fright. जब हमें लगता है कि बाप रे अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, दिस इज डेथ फ्राइट. अब मेरा क्या होगा, अब कैसा होगा, मैं इसमें से कैसा बच सकता, दिस इज द डेथ पैनिक. तो ये जब कंडीशन सिचुएशन आती है, देन लंग्स विल बिकम अफेक्ट. Now we will see a simple case of bronchiectasis from the class of SCPH. So डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने ये केस SCPH में हमें बताई थी. तो बहुत ही अच्छी केस है. डिटेल हिस्ट्री मैं नहीं लूंगा यहाँ, थोड़ा सा मैं सुपरफिशियली जाऊंगा क्योंकि आज का चैप्टर वैसे ही काफी बड़ा है. So the bronchiectasis, she is a lady, middle-aged lady, having complaint of bronchiectasis with many other problems like pleural effusion, leukopenia, hypotension,
drug-induced hepatitis, whole body drenched in sweat, admitted in ICU, fever every day in the evening 7 to 4 a.m. So this was the chief complaints of this lady, and the most important thing that was bronchiectasis. That's why she was admitted in ICU. Every year she has this lower respiratory tract infection. Now facing acute situation one, and in this condition her peculiar desire, that is the want to have fish, desire for fish, cravings for fish in ICU. So this was a peculiar, typical, specific desire. So it is important for us. Her life situation was, she was middle-aged woman, works in hospital as a nurse. So she is connected with medical science. So family oriented. She was very family oriented, caring and loving to her family. She was worried about children and husband and house. So this is important. She was worried about children, husband and house. इसका मतलब इनसे रिलेटेड कुछ कभी प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उसे ब्रोंकाइटिस हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ. So once she is friendly, she does anything to that person. किसी के भी साथ अगर वो जब बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाती है, एकदम क्लोज हो जाती है, तो उस पर्सन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है. क्लोज टू वेरी फ्यू पर्सन्स. एंग्जियस एंड पैनिकी लेडी, very anxious and panicky. Because of this panicky nature, her lungs affect. In case of some things happen by she can't speak and with trembling her legs. Matlab fear, fright. That's indicates that she is very timid lady. Yes. हाथ पैर में थरथरियाना, अगर कुछ हो गया उसकी वजह से या फिर उसकी तरफ से, तो पहले ही डर जाना. ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं इसे डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब इसे समझ में आ जाता है कि उससे गलती हुई तो उसका रोना शुरू हो जाता है, या फिर वो इतना डरता है कि वो सामने ही नहीं आएगा. कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा डांटे ना तो ये तो पेशाब कर देगा, इतना थर थर कांपता है, इतना डरता है. सो दैट मीन्स दीज आर द timid constitutions, और इन कॉन्स्टिट्यूशंस को हमेशा लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं. यस. सो फियर ऑफ डार्क, ड्रीम्स ऑफ डेड persons and snakes. So this was her history. And one thing here given, typical dreams of snake, in whatever manner they worse disease. जब भी उसे स्नेक के ड्रीम्स आते थे उसका ब्रोंकाइटिस बढ़ जाता था. एंड स्नेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी पेशेंट जब हमें स्नेक के लिए ड्रीम्स बोलता है, डेड पर्सन के लिए स्नेक ड्रीम्स बोलता है, तो इट इज अ सिपिलिटी, इट इज टिपिकल. और तभी ये स्ट्राइक इसको म्यूट रखिए डॉक्टर अरविंद मस्के. So dreams of snake, whatever manner they worse disease.
you are going to get, it's purely syphilis and indicate that you are going to be in problem. जब भी स्नेक के ड्रीम्स होते हैं, डेड पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, तो कुछ तभी सिपिलिटिक होने वाला है बॉडी में, समझ लेना। दिस इज इंडिकेशन। जो सबकॉन्शियस माइंड में आया वो बॉडी में आगे चल के होने वाला है, आगे चल के बॉडी में ऐसा कुछ सिपिलिटिक होगा, उसका इंडिकेशन है ड्रीम्स ऑफ स्नेक। सो क्लू इज द स्नेक and dreams of cockroaches, bedbugs, lizard are also bad indication. इस तरह के भी अगर ड्रीम्स आते तो इट इज आल्सो बैड इंडिकेशन, दैट मीन्स सिपिलिटिक विल occur in his life. Another danger indication is God. तो गॉड के भी सपने नहीं आने चाहिए, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड somewhere, you are connected with that natural supernatural power, so it is not a good thing for us, that is the dreams of God. These are not supposed to be in real life. So even liking and aversions change when something going to happen. ये भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन सर ने यहां बताया कि लाइकिंग एंड एवर्जन जब चेंज हो जाते हैं तब कुछ तभी डेंजरस होने वाला है, या फिर कुछ तभी ऐसा लाइफ में होगा जो अनकॉमन है। आप देखो बहुत बार ऐसा देखे गया, ऑब्जर्व किए गया कि जो पेशेंट के मतलब जो मौत के शैया पे बोलते हैं हम, एट द लास्ट टाइम ऑफ द लाइफ, बहुत से लोग जो चीज उन्होंने लाइफ लॉन्ग कभी खाई नहीं, टेस्ट नहीं की, और वो चीज उस पीरियड में मांग लेते हैं, तो समझ लेना कि कुछ तभी डेंजरस होने वाला है। यस, सो ये बहुत अच्छा सर ने बताया कि लाइकिंग एंड एवर्जेंस चेंज व्हेन समथिंग गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, सर ने एक एग्जाम्पल भी बताया था, अ गर्ल हु लव्ड टॉयज, a girl who loved toys sees goddess, उसे हमेशा देवी दिखती थी, and that was काली माता, everywhere before getting a plastic anemia, और बाद में कुछ दिन बाद जाके उसे प्लास्टिक एनीमिया हुआ। यस, सो इस तरह का कुछ डिल्यूजन, कुछ ड्रीम्स अगर होते हैं तो कुछ तभी डेंजरस बॉडी के अंदर होने वाला है, ये उसका इंडिकेशन है। यस, सो ड्रीम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू थिंक एंड व्हाट्स रॉन्ग हैपनिंग इनसाइड। तो ये ऐसा क्यों होता है और बाद में बॉडी में कोई सिफिलिटिक डिजीज क्यों होता है? तो ये सब कुछ होता है, जो ड्रीम्स होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के बाद आता है माइंड। तो माइंड, ब्रेन, देन बॉडी। तो सबकॉन्शियस माइंड के बाद, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में स्टार्ट होगा तो बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में अगर सिफिलिटिक स्टार्टिंग हुआ तो बॉडी में कुछ तभी पैथोलॉजिकल सिफिलिटिक हो जाएगा। यस, नाउ कम टू द केस। acute psoriatic inflammation on right lung changes to psychotic accumulation on left side। अब ये जो इन्फ्लामेशन राइट साइड में था, राइट साइड ऑफ लंग्स में था, उसके बाद वो सेंट्रल एक्सिस क्रॉस करके लेफ्ट साइड में क्यों गया? तो इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। तो जैसे कि ब्रेन में अगर लेफ्ट साइड में ट्यूमर है और
कुछ दिन बाद वो राइट साइड में एक्सटेंड होता है, तो उसने सेंट्रल एक्सिस क्रॉस किया, नाउ इट बिकम्स एपिलेटिक, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस जब क्रॉस होता है तो इट बिकम्स एपिलेटिक। तो राइट लेफ्ट का राइट में क्यों गया या फिर राइट का लेफ्ट में क्यों गया, तो उसके पीछे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीजन होता है। विदाउट रीजन कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें राइट में जब जाता है, मतलब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, तब उसका भी पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना जरूरी है, उसका भी कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करना जरूरी है। सो अब ये राइट टू लेफ्ट क्यों हुआ, और वहां पे माइजम भी चेंज हुआ, सोरा टू साइकोटिक हो गया, राइट। सो इसका रीजन भी आगे दिया है। नाउ ल्यूकोसाइटोसिस, दैट मीन्स द WBCs 10,000 is soaring, up to 10,000 WBC count is soaring, and when 10,000 to 20,000 it is psychotic. So anxiety started and anxiety changed to panic and anguish when asked she gets a dream of dead lady comes in dream. Listen. She become panic, anguish. After when she gets a dream of dead lady, कोई तभी उसके पहचान की लेडी जो पहले ही डेथ हुई है उसकी, वो उसके सपने में आई, और उसके बाद सी बिकम एंग्विश एंड पैनिक। आफ्टरवर्ड सी सफर्स फ्रॉम ब्रोंकाइटिस एंड आस्क हर टू कम विथ हर। और वो लेडी ने क्या बताया, क्या बोला, सी आस्क हर टू कम विथ हर, मेरे साथ चलो, एंड सी इज डेड रिलेटिव्स अराउंड हर हाउस। जितने भी रिलेटिव्स की डेथ हुई थी, शी सीज दैट ऑल रिलेटिव्स कम around her house. This was very bad, dangerous dream. ये सब ड्रीम्स के बाद ही उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। नेक्स्ट डे शी गेट्स फीवर एंड गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड। दिस टाइम दैट डेड रिलेटिव्स केम एंड टोल्ड दिस टाइम आई विल श्योरली टेक यू। देखो ड्रीम्स कैसे आ रहे। उसके बाद हॉस्पिटल में भी उसे ड्रीम आया कि आई विल श्योरली टेक यू। या ये सिचुएशन जब हमारे कॉमन मतलब लोग जब सोचते हैं, या फिर जो लोग बेड पे होते हैं बहुत क्रॉनिक डिजीज से सफर होते हैं, तो उनको अगर ये ड्रीम्स आए तो हम लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं कि इसे यम दिख रहा है ना, यम लेने आ रहा है, अभी उसके आखिरी के दिन है, इस तरह के हम लोग बातें करते हैं। लेकिन देखो ये जब बातें होती हैं कि इसे अब वो लोग बुला रहे हैं, इसे हम दिख रहे हैं, इसे वो भास हो रहा है, इसे वो समझ में आ रहा है कि अब इसके दिन भर गए, अब इसको इसकी मौत दिख रही है, लाइक दिस। लेकिन इस कंडीशन से भी हम पेशेंट को निकाल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। ये केस पूरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन जब आती है तो तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन से भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इसको निकाल सकती है। यस, सो आई विल श्योरली टेक यू। उस ड्रीम में उस लेडी ने कहा कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बार तो मैं पक्का तुझे लेके जाऊंगी। फ्रॉम देयर हर कंडीशन स्टार्ट डिटोरेटिंग। उसके बाद उसे आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पे रखा। Then she was afraid that she can never see her children and home again in her life. ये ड्रीम के बाद उसने तो पूरी होप ही छोड़ दी। She completely become hopeless कि अब तो मेरा बचना नामुमकिन है, अब मैं शायद ही घर जा पाऊंगी, मेरे बच्चों को मिल पाऊंगी, मेरे घर को देख पाऊंगी। That shifted her complaint to left now. देखो
ये ड्रीम आने के बाद उसका इन्फेक्शन जो राइट में था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, सोरा टू सिफिलिस, सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस, सेंट्रल एक्सिस क्रॉसिंग इज सिफिलिस। सो पहले राइट लंग्स था, नाउ लेफ्ट लंग, मतलब कंप्लीट लंग्स यहां पे डैमेज हो चुका है। सो और जो राइट से लेफ्ट में हुआ उसका पॉजिटिव फैक्टर भी मिल गया, उसका कॉन्फ्लिक्ट भी मिल गया, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज एंग्विश अबाउट हर चिल्ड्रेन एंड होम। चिल्ड्रेन एंड होम कम्स टू द लेफ्ट साइड। इसलिए इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी ही चाहिए और इसके लिए इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब किसी भी पार्ट, एक पार्ट से अगर दूसरे पार्ट में डिजीज ट्रांसफर होता है तो 100% उस पार्ट का भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि ये पार्ट में से उस पार्ट में ही क्यों गया, तो उसका भी कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे यहां निकाला कि लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट लंग में ये, राइट लंग से लेफ्ट लंग में ये गया, तो उसकी वजह थी दैट इज द एंग्विश अबाउट चिल्ड्रन एंड होम। तो ये जो एंग्यूशनेस था इसने लेफ्ट लंग को भी वीक बना दिया और जो डिजीज है इजीली वहां पे ट्रांसफर हो गया। सो इसके लिए डॉक्टर हैमर क्या कहते हैं? डॉक्टर हैमर सेज गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स कैरी इन हर लाइफ। ये सब सिचुएशन क्रिएट होने के लिए ऐसी क्या सिचुएशन उसके लाइफ में थी, वो क्या सिचुएशन थी जिसमें वो इतने स्कैरी फील कर रही थी? एंड दैट वाज देयर वाज प्रॉपर्टी इश्यूज विथ हर हस्बैंड इन फैमिली। सो हस्बैंड के फैमिली में बहुत से प्रॉपर्टी इश्यूज थे जिसकी वजह से शी बिकम्स कैरी एंड हैविंग दिस डिजीज। So, analysis of this case, she was having weak will, morals good, intellect good. So, we always search for will, intellect and morals, और इसका will जो था बहुत ही weak था, that's why she was timid. Morals are good and intellect is always good. The miasm is psychosyphilitic, accumulation of mucus and damage of lungs. Rubrics from this history. आप लोग बताइए रूब्रिक्स, आप लोगों ने क्या सोचा इस केस के लिए? जो इतना इजीली हमें दिख रहा है कि डिल्यूजन और ड्रीम्स ऑफ डेड पर्सन, डिल्यूजन्स इज डेड रिलेटिव्स, डेड पर्सन्स, देन बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तभी होगा, कुछ तभी होगा, दैट इज द फियर हैपन समथिंग विल very timid lady and dreams of dead people, dreams of dead people. Yes, so these are the prominent rubrics from this case, but for repertorization we want, yes, अब repertorization के लिए क्या लेना जरूरी है आप बताइए? Yes, tell me fast. Only Dreams सुनना of नहीं। dead people. Yes, बोलिए। Dreams of dead peoples. Dreams of dead people, dead relatives, illusion, dead relatives, dead people sees, Healing. or fear something will happen,
सबसे Yes. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये चीज अगर इस कंडीशन में अगर किसी चीज के लिए क्रेविंग डिजायर है या फिर जो उसके मेन क्रेविंग्स थे वो चेंज हो गए और चेंज क्रेविंग्स एवर्जन्स ऑलवेज गिव्स Syphilitic. इंडिकेशन ऑफ समथिंग डेंजरस विल हैपन, है ना, Yes. सिपिलिटिक। सो वो क्रेविंग्स क्या था? क्रेविंग फॉर फिश, Fish. Yes. craving for fish is important here. Yes. So, Yes. so we will repertorize with this rubric. So from this, most important is delusions is dead person, dreams of dead person, dead people, fear something will happen, desire fish, and anxiety about home. Anxiety about home. So from these rubrics, the remedy natrum pos, we get natrum pos. तो नेट्रम पॉस, क्या नेट्रम पॉस इस कंडीशन से पेशेंट को बाहर ला सकता है? जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, जो ब्रेथलेस, सीवियर ब्रेथलेस कंडीशन में है, पूरा लंग्स, राइट लेफ्ट बोथ लंग्स बिकम डैमेज, तो नेट्रम Yes. पॉस इस कंडीशन से बाहर पेशेंट को ला सकता है क्या? Yes, sir. नेट्रम पॉज के लिए आपको क्या क्या पता है? नेट्रम पॉज के बारे में आपको क्या क्या पता है, बताइए थोड़ा। तो ये जो डिजायर होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे सिपिलिटिक केसेस में इस टाइप की अगर डिजायर मिलती है, जैसे कि मेरी जो गैंग्रीन की केस थी, उस केस में मैंने डिजायर फॉर कॉफी लिया था, क्योंकि वो बहुत ही टिपिकल मुझे लगा कि इतने सीवियर कंडीशन में पेशेंट इज गोइंग टू डाई एंड ऐसे कंडीशन में ही वांट्स अ कॉफी, डिजायर क्रेविंग फॉर कॉफी इज इंपॉर्टेंट। यस, सो यहाँ पे भी सर ने डिजायर फिश लिया, इट इज इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह भी सर ने बता दिया कि इस तरह के अगर कुछ क्रेविंग्स डिजायर चेंज होते हैं तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो नेट्रम फॉस, इट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम नेट्रम ग्रुप, और नेट्रम ग्रुप आपको पता है बहुत ही इंट्रोवर्टेड होता है बट फैमिली ओरिएंटेड होता है। यस, सो ब्रोंकाइटिस विल रिमेन एज सच but she won't get frequent infection since it's a permanent structural change. Yes, so irritability, it is soric, psychotic is complaining, and syphilitic is intolerance. Natrum mure stays in past only. देखो नेट्रम म्यूर का क्या पिक्यूलियर होता है कि ही स्टेज इन पास्ट ओनली, हमेशा पास्ट की बातें करेगा। Natrum phos easily, natrum phos easily goes into the past, fear too. And why fear? Because of phosphorus element. Yes. So natrum mure always stay in past, but natrum phos easily goes into past because of fear. बहुत से लोग होते हैं ना, हमेशा बोलते रहते हैं, नहीं तुझे पता नहीं क्या पहले क्या हुआ था, तो इस तरह का डर दिखाते रहते हैं।
इसके पहले भी ऐसा हुआ है, इसके पहले तूने भुगता है ना? देखो उसका अनुभव नहीं है क्या? तूने वो देखा नहीं था क्या? तो ये पास्ट की बातें जो करते रहते हैं तो वो मोस्टली नेटरम्स होते हैं। सो जो पास्ट की बातों का डर दिखाते हैं या फिर उन बातों से डरते रहते हैं उनके लाइफ में। यस, सो सोरिक पीपल व्हेन वेक अप फ्रीक्वेंटली दे चेक फीवर इन सोरा। जैसे कि नेट्रम ग्रुप के पेशेंट है तो अगर वो सोरिक है तो बार बार वो फीवर चेक करेंगे, लेकिन वो किसी को बताएंगे नहीं कि मुझे इतना फीवर है। वो देखेंगे, थर्मामीटर रख देंगे, किसी ने पूछा कितना, नहीं नहीं ओके, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। सो दिस इज नेचुरल। सो नेट्रम फॉस न्यूरल से सोडियम गोज इनसाइड एंड पोटेशियम आउटसाइड। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी है नेट्रम ग्रुप की कि कभी भी कुछ भी अगर डेंजर आता है, स्टिमुलेशन आता है तो नेट्रम गोज इनसाइड एंड पोटेशियम कम्स आउटसाइड। दैट्स व्हाई सोडियम natrums are introverted and family oriented. So that means sodium is homely person, बहुत ही family home related, sensitive to family, sensitive to home, sensitive to relations. So if it's natrum-mure, it revolves around a person, yes, and if it's natrum-phos, it revolves around the home. Natrum always related to persons, मतलब फैमिली मैन, फैमिली पर्सन, रिलेटिव्स, क्लोज पर्सन, हमेशा उनके कंसर्न में होते हैं, उनसे रिलेटेड। और नेट्रम फॉस रिवॉल्व्स अराउंड द होम, इनको घर की चिंता, घर से बहुत कंसर्न इनका होता है। यस, नेट्रम इज एन इंट्रोवर्ट, डजंट ओपन अप, talk indisposed to, close sensation in throat, yes, in throat close sensation। वही अगर लैकेशिस है तो स्नेक है तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे क्लोज सेंसेशन। सिंगल रेमेडी रूब्रिक, यस, इट इज अ सिंगल रेमेडी, क्लोज सेंसेशन इन थ्रोट, हैविंग सिंगल रेमेडी नेटवर्क। एंजाइटी होम अबाउट awakens with a fear that his child is dead, having a trifles element, yes। नींद में से ये डर के उठते हैं, एक तो ड्रीम की वजह से या फिर दिस डिल्यूजन, चाइल्ड इज डेड, माय चाइल्ड इज डेड। दिस इज नेट्रम फॉस। गुड होम मेकर, यस, दिस पीपल्स आर गुड होम मेकर, घर के बहुत ही अच्छे इंसान, घर चलाने वाले, घर को संभालने वाले, हर घर के हर मेंबर की केयर करने वाले, लविंग टू ईच पर्सन ऑफ द होम। गुड मदर, शी मे बी, यस, नेट्रम फॉस, गुड मदर, गुड वाइफ, गुड डॉटर इन लॉ, सब गुडी गुडी बिकॉज ऑफ फॉस्फरस एलिमेंट। caring, loving, emotionally vulnerable, yes, phosphorus element, because of all things are because of phosphorus element। Fear is there, yes, because of phosphorus fear is there, this is psychosis। Fearful, fear in night, fear something will happen, frightened easily, fear of thunder, fear of thunder, again the phosphorus element। Imagines the people or furniture are dangerous, this is imagination। डिल्यूजन भी हो सकता है कि डेंजर फ्रॉम डेंजरस और फील्स डेंजर फ्रॉम द पीपल्स और द फर्नीचर्स।
Delusion sees dead, yes. Sees things, hearing footsteps. These are all delusions. Anxiety night, before midnight, waking up. Starter in slight noise. Natrum, all natrums are sensitive to noise. Started in slight noise. Started in sleep during. Starter noise block. Noise block. Physically, they are chilly, thirsty, sometimes thirstless, craving for fish and fried items. Yes. So craving for fish and fried items. So this is the natrum pause, and natrum pause 200 cured this bronchiectasis. Yes. So this was the case. बहुत अच्छे रूब्रिक्स सर ने इस केस में लिए, बहुत अच्छा एनालिसिस इस केस का किया, एंड शी बिकम कंप्लीटली क्योर विथ natrum pause. यस, तो bronchiectasis, what is bronchiectasis, pathophysiology, miasm, conflict, layer, ये सब समझ में आया. इस पे अगर किसी को डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं. हमारे पास 6 मिनट है. यस, डू फास्ट. गुड इवनिंग सर. सर यहीं पे अगर नाइट्रम कार्ब होता तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती सर? फर्स्ट क्वालिटी की ये नेट्रम कार्ब नहीं है. सर है ना. यस. He was loving, caring. नेट्रम कार्ब लविंग केयरिंग के बजाय, जैसे कि नेट्रम फॉस में लविंग केयरिंग होता है, एंजाइटी अबाउट होम होता है, वैसा Yes. नेट्रम कार्ब में ये चीजें नहीं होती. इसके बदले में नेट्रम कार्ब इज वेरी कंसाइंशियस. He is also related to family, but only family, and only one person from the family. This is natrum carb. Yes. And natrum carb having aversion to milk. Very much sensitive to sun. This is natrum carb. Natrum carb diligent but non-expressive. सर लेफ्ट नी पेन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? लेफ्ट नी पेन सर, कॉन्फ्लिक्ट. लेफ्ट नी पेन. लेफ्ट साइडेड नी पेन सर. नहीं, आपका आवाज नहीं समझ में आ रहा. लेफ्ट साइडेड नी पेन पूछ रहे हैं सर. नी पेन. लेफ्ट साइडेड नी पेन. ओके. यस. Knee joint pain, left side. Yes. Related to mother, related to children, related to home, related to juniors. Yes. तो इन लोगों की वजह से या फिर इन लोगों के सामने ऐसा कुछ हुआ, हमें घुटने टेकने पड़े, या फिर इन लोगों की वजह से हमें घुटने टेकने पड़े. That is the self-devaluation because of this person is left side conflict. Okay? Yes. Thank you sir. सर आपने नेट्रम फॉस में जो थ्रोट का सेंसेशन बताया ना, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. उसको लैकेसिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यस, लैकेसिस में क्या होता है, लैकेसिस में ब्लॉक सेंसेशन होता है कि थ्रोट बिकम ब्लॉक.
और बिकम वेरी मच सेंसिटिव टू, कुछ भी टाइट अगर नेक के अराउंड होता है तो दे फील्स दैट माय थ्रोट बिकम क्लोज पैक। और ये जो नेट्रम फॉस में यहाँ पे क्लोज सेंसेशन होता है कि मेरा जो श्वास नलिका है, मतलब ट्रकिया, ये क्लोज होते जा रहा है, क्लोज होते जा रहा है। दैट्स व्हाई शी फील्स ब्रेथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्लोज सेंसेशन कि अब मेरा जो गला है वो बंद होते जा रहा है या फिर बंद हो जाएगा, तो ये सेंसेशन नेट्रम फॉस में होता है। ऐसा सेंसेशन लैकिसिस में नहीं होता है। लैकिसिस इज वेरी मच सेंसिटिव टू नेक, कि कुछ भी अगर यहाँ पे टाइट आ गया तो सी बिकम्स रेस्टलेस। लैकिसिस कि नहीं, इससे तो मेरा दम घुट रहा है। yes. तो वो एक्सटर्नली सेंसिटिव ज्यादा होते हैं लैकिसिस, और ये इंटरनली सेंसिटिव, इनको ऐसा लगता है कि अंदर से मेरा क्लोज होते जा रहा है। यस, थैंक यू सर। और सर लंग्स के बाकी डिसीजेस भी लेंगे ना हम? यस, लंग्स के बाकी डिसीजेस भी आप लेंगे ना, जैसे अस्थमा है, लंग कैंसर है, लंग फेलियर है, लंग कैंसर, इनके भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह लेने वाले हैं ना? लंग्स के लिए ये मेन यही कॉन्फ्लिक्ट है, फियर, डेथ फियर। फिर लंग्स का कोई भी डिजीज होने दो, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस, सबके लिए एक ही, न्यूमोनिया, सबके लिए एक ही। सर जैसे बहुत लोग कोविड में सफर हुए हैं ना, कोविड में एडमिट रहे हैं, उनको लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है, तो उनको बाद में मतलब अभी 2 साल बाद 3 साल बाद भी बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आ फियर, रही हैं। स्केर्ड हो गए थे ना सब लोग कोरोना पीरियड में। सर वो तब हुए थे, वो फाइब्रोसिस हो गया था बाद में, तो अब यस, कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसको कैसे लेंगे, क्योंकि वायरल वही सप्रेस हुआ था ना उनका वहां पे। कॉन्फ्लिक्ट वही रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चेंज होगा। कॉन्फ्लिक्ट फियर एंड फ्राइटी है। फाइब्रोसिस हो रहा है, दैट मीन्स सिपिलिटिक कॉम्प्लिकेशन है उसका, ये सिपिलिस है। ओके सर। पर सर कंप्लेंट्स कुछ नहीं, और वापस से 2 साल के बाद अगर ट्रिगर होती है कंप्लेंट, तो यहाँ कुछ नया फियर फैक्टर मिलेगा अपने को, ऐसा? कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ है क्या, मिलता है क्या। सर सर्वाइकल में टीबी अगर होता है तो क्या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? गले में टीबी की गठाने आती है, नोड्यूल्स, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होता है, तो उसका क्या तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? लिम्फ नोड अफेक्ट हो रहे हैं ना वहां, अच्छा, तो आपको लिम्फ नोड का कॉन्फ्लिक्ट निकालना पड़ेगा। क्या है सर उसका? लिम्फेटिक सिस्टम अगेन डिवैल्यूएशन। अच्छा, यस, ओके, यस, थैंक्स। हेलो हेलो सर। हाँ, हाँ सर, अभी पेशेंट बोलते हैं सर पहले क्रैविंग स्वीट था, लेकिन 1-2 साल से जब से कंप्लेंट हो गई तो स्वीट्स क्रैविंग कम हो गया या एवर्जन हो गया। तो सर ओरिजिनल लेना चाहिए या डिसीज के बाद चेंज वाला लेना चाहिए इन साइकोटिक डिसीजेस में भी? ऐसे कंडीशन में जब आप लोग हम लोग पूछते हैं पेशेंट को कि आ, मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से क्या क्रेविंग्स था, और टिपिकली कुछ डिजीज के पहले या फिर डिजीज के बाद उसका क्रेविंग चेंज हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ ये कुछ सलाइवरी सिक्रेशंस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि डिजीज कौन से माइजम का है। अगर वो सिपिलिटिक है तो फिर हमें वो कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे क्रेविंग्स जो था, डिजायर था, एवर्जन में चेंज हो गया, तो फिर आप उसको एवर्जन को ले सकते हैं। अगर एवर्जन फॉर स्वीट है और पहले सिवियर क्रेविंग था, नाउ बिकम सिफिलिटिक डिजीज
पैथोलॉजी बिकम सिफिलिटिक तो आप उसे एवर्जन फॉर स्वीट ले सकते हैं, लेकिन अगर साइकोटिक है, सोरिक है, तो फिर मत लीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस केस थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय बाय, सी यू। बाय बाय सर। यस, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।